So what is a zero polynomial? A zero polynomial is the constant polynomial zero. It is nothing but called as a zero polynomial. So always remember, a constant polynomial zero, which can also be expressed as 0 into x raised to the power 0, is nothing but called as a zero polynomial. So this is all about the very special type of two polynomials, that is a constant polynomial and a zero polynomial. Now let's just move on further toward a very special topic. A special topic which involves two definitions, that what is the meaning of a variable and what is the meaning of a constant. So let us suppose I am relating these two words with the real life. So what is the meaning of variable? Variable का मतलब क्या है? जो चीजें vary करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? Variable. So let us suppose I am talking about our life cycle. We do know that कि हमारी life cycle जो है वो हमेशा vary करती रहती है, वो कभी भी constant नहीं रहती. पहले हम छोटे होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं और we'll move towards our we can say old age. So ये क्या है हमारे लिए? ये एक ऐसा साइकिल है जो हर एक स्टेप पे वेरी करता रहता है. So वैसे ही मैथ्स का वर्ड है हमारे पास, और मैथ्स का वर्ड है स्पेशल, दैट इज वेरिएबल, जो हम क्या यूज करते हैं? इधर x यूज करते हैं, इधर y यूज करते हैं, z यूज करते हैं. उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू हमेशा चेंज करती रहती है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कांस्टेंट? सो लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द लव दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, दे ऑलवेज स्टिक टुगेदर. सो इसका मतलब क्या है कि देयर लव इज ऑलवेज कांस्टेंट विद अस. सो अगर इसी चीज को मैं मैथ्स के साथ रिलेट करूं तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो हमेशा एक ही रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. फॉर एन इंस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर 2, द नंबर 3, the number 4, the number 5, they all are constant, they all remain same. But variables क्या है? Variables change हो सकते हैं. अगर मैं x की वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. It can be 5, 6, 7, 8, any number. But अगर मैं किसी constant के बारे में बात कर रही हूँ तो constant always remains the same. So I guess the definition of the variable and the constant is all clear to you. Now let's just move on further because we wanted to talk about the variables and the constants more. So let us suppose we are talking about the classification of polynomials. What is the meaning of the classification of the polynomials? That we are going to talk about more type of polynomials rather than just a zero and a constant polynomial. So classification of polynomials में हम तीन टाइप के polynomials पढ़ेंगे. First of all monomial, second one is binomial and the third one is trinomial. So one by one हम इनकी डिस्कशन शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल की. What is the meaning of monomial? So monomial हमारे पास क्या है? Definition says that polynomials having only one term is called as a monomial. So monomial का मतलब क्या होता है? ऐसे polynomials जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. Let us suppose I am talking about a monocycle. What is a monocycle? मोनोसाइकिल होती है हमारे पास एक ऐसी साइकिल जिसमें सिर्फ एक ही व्हील होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसाइकिल. तो वैसे ही मोनोसाइकिल से याद रखिए मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. सो स्पेशल नोट यहाँ पर क्या है? लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ मोनोमियल which is nothing but 2x cube. 2x cube. Let us suppose I am talking about y. Let us suppose I am talking about 2. All of them are nothing but monomials. ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? monomials हैं. क्यों? क्योंकि इन सब में सिर्फ एक ही टर्म है. So 2x cube, y, 2 are all monomials. ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? मोनोमियल्स है. तो मोनोमियल्स से याद रखिए मोनोसाइकिल. मोनोसाइकिल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही व्हील था. उससे हम क्या याद रखेंगे कि ऐसी टर्म्स या फिर ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोल देते हैं? मोनोमियल बोल देते हैं. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर टुवर्ड्स बाइनोमियल.
So let's just talk about binomial, as it is clear from the word binomial means two. Bi means two. So the definition is the polynomials that are having two terms in it. It is called as a binomial. So binomial को हम याद रख सकते हैं bicycle से. So bicycle में हम क्या बोलते हैं? There are two wheels in the bicycle. It means that ऐसे polynomials जिनमें दो terms हो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? Binomial. So for an instance, I'm talking about x square plus of 2. So x square is the first term, 2 is the second term. It means that this polynomial is nothing but called as a binomial. So binomial से क्या याद रखेंगे? Polynomials which are having two terms in it, they are called as binomial. So let's just move on further toward the third type, which is trinomial. अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, try means तीन के बारे में बात हो रही है. So polynomials that are having three terms is called as a trinomial. So trinomial से हमें याद आ जाती है ट्राईसाइकिल. ट्राईसाइकिल जिसमें हमारे पास कितने व्हील्स होते हैं? देयर आर 3 व्हील्स. तो उससे याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल्स जिनमें तीन टर्म्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. फॉर एन इंस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर plus of 2x plus of 1. So there are three terms in it. First one is x square, second one is 2x and third one is 1. So ऐसे such polynomials जिसमें तीन terms हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? Trinomial. So always remember monomial, binomial, trinomial. Monomial means one term, binomial means two term, trinomials mean three terms. So let's just move on further and let's talk about the degree of a polynomial. What is the meaning of a degree of a polynomial? So let us suppose I am taking an example and we do have a polynomial as 4x cube plus 3x square minus of x plus of 7. So first of all हम क्या करेंगे? सारे के सारे डिग्रीज जो है वेरिएबल x की वो हम कलेक्ट कर लेते हैं. So अगर हम स्टार्टिंग से देखें और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले जो हाईएस्ट हमारे पास पावर चल रही है x की, दैट इज नथिंग बट 3, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव द पावर ऑफ x as 2, and further on x has a power as 1 and we can write 7 as 7 into x raised to the power 0. So let us suppose I'm writing it as 7 into x raised to the power 0. So let us suppose we can write it as 7 into x raised to the power 0. तो अगर मैं इनकी सारी पावर्स को कलेक्ट कर लूं तो मेरे पास पावर्स जो है वो कैसे आ जाएंगी? Let us suppose I am calling the powers as exponents because powers and exponents are one of the same thing. So सबसे पहली पावर थी हमारे पास 3, फर्दर हमारे पास थी पावर 2, फर्दर था 1 एंड फर्दर था 0. सो ध्यान से देख लीजिए x की जो पावर्स हैं वो कैसे थी? 3, 2, 1 एंड 0. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? सो ऑलवेज रिमेंबर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिग्री. तो अभी जो हमने पावर्स कलेक्ट की हैं उनमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू इज नथिंग बट 3. सो दिस 3 इज नथिंग बट कॉल्ड एज the degree of the polynomial. So if there is a question that what is the degree of this particular polynomial, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? सारे के सारे जो हमारे पास पावर्स हैं वेरिएबल x की वो कलेक्ट करनी है. उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? डिग्री ऑफ द polynomial. So I hope this example is clear to you that what is the meaning of a degree of the polynomial. Always remember the highest power or the highest exponent of the variable in the given polynomial is nothing but called as the degree of a polynomial.